सीता को लेकर कि योद्धा थी, सर ने कहा कि वो 1980s के सीरियल की तरह दिखाया है, लेकिन ये बुक में योद्धा दिखाया उन्हें, तो कुछ परसेप्शन बदली है आपकी सीता को लेकर? देखिए, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जहाँ तक मैं समझती हूँ, ये मुझे ऑलवेज एक जानकारी थी कि जो हमारी औरतें थी, जो एंशियंट इंडिया की औरतें थी, काफ़ी एक मैट्रियार्कल सोसाइटी भी हुआ करता था। एंड जहाँ के औरतों को फ्रीडम था, न कुछ ऐसा पर्दा सिस्टम था, न कुछ ऐसे था कि आप औरत हैं तो आप ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। आपने अगर हमारी हिस्ट्री पढ़ी है, हमारी बहुत बुलंद रानियां रह चुकी हैं जो जुनून लेके योद्धा भी होती थी। तो वो हमारा एंशियंट इंडिया था। कहीं ना कहीं वो कुछ परसेप्शन बदलता गया अबाउट इंडियन विमेन। एंड जैसे कि आमिश ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी औरतें रहती थी और जहाँ हमारी जैसे लिनिएज जिसको बोलते हैं, जो एक नस्ल चलती आ रही है, उस नस्ल को वापस और हमारी औरतों को वापस उस मुकाम पर लाना जहाँ आदर, रिस्पेक्ट और उनको उनके राइट्स दिए जाएं। तो फॉर मी सीता जहाँ तक कि मेरे समझ में थी, अंत में भी उन्होंने कभी अपनी खुददारी नहीं खोई। आप अगर पूरा पढ़ें तो जिस रूप में आमिश उनको ला रहा है वो बहुत ही इट्स अ रेवलेशन एक्चुअली। शायद नॉट फॉर पीपल लाइक मी, जिनको ऑलरेडी, मुझे ऑलवेज इंटरेस्ट था हमारी हिस्ट्री में, ऑलवेज हिस्ट्री इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा, बहुत सारे लोग हैं जो अब तक कहीं ना कहीं जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है उसको आई फील ऑलमोस्ट दबाया गया है। और जो हमको सिखाया गया, जो हमारे ब्रिटिश टेक्स्ट बुक्स में आ गया, वो जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए टेक्स्ट बुक स्कूल में दिए थे, उसमें से हम जानकारी पाके वो ऑलमोस्ट टीवी सीरियलिश हो गया था। या तो जो अमर चित्र कथा से हमने पढ़ा वो हमें पता चल गया। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बुक्स लाइक दिस टू कम आउट, वेयर वी स्टार्ट सीइंग आवर विमेन इन द ट्रू राइचियस, strong form that they've always worshipped in. That's why our women most of the time were worshipped. अगर आप देखेंगे, हमारी औरतें इतनी स्ट्रॉन्ग थी, एंशियंट हमारा जो कल्चर था, कि चाहे आप नदियों को ले लो या हमारे पहाड़ों को ले लो, वो औरतों के ऊपर ही उनका नाम दिया जाता था। सो आई बिलीव दैट एंड इवन अगर आप हमारी धरती को हम धरती माँ पुकारते हैं, भारत को भारत माँ पुकारते हैं, तो वो हमारे कल्चर में रहा है। उसको उभर के वापस लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, एंड आई थिंक व्हिच ही हैज डन विद द कैरेक्टर सीता। रवीना, इसके अलावा आपने कहा कि आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत पसंद है, तो बाहुबली काफी अच्छा कर रही है बिजनेस के मामले में भी। बाहुबली इज फिक्शन, बाहुबली इज नॉट आवर हिस्ट्री। बाहुबली फिक्शन है, वो तो फिल्म है। पॉपकॉर्न लो, कोल्ड ड्रिंक लो, जाके एंजॉय करो और वापस आओ। आपने देखी, आपको कितनी आई थिंक क्वेश्चंस मुझे तो बहुत अच्छी लगी यार ये फिल्म्स की। मैं क्यों नहीं कुछ बोलूंगी, को तो पसंद आनी चाहिए। मुझे तो पसंद आई। Amish, I like to ask one question. Like, after modern outlook of Ram in your first book, and then a very different personality of Sita in this book, which another character of Ramayana is stirring in your mind? Actually, the next book will be on Ravan. Actually, so there'll be my interpretation of Ravan, and I've started writing it already, and I'm having a lot of fun writing it. Yeah, so I'm kind of maybe one tenth of the way through, but I'm having fun writing it. He started writing and I've already started thinking, किसको बुला सकते हैं रावण के लॉन्च पे? रावण के लॉन्च पे ये किसको बुलाएगा, वो मुझे देखना है। Don't suggest the guest names here. That's what will get printed. रावण का कवर कौन लॉन्च करेगा? इसके अलावा बुक पर फिल्में बनाई जा रही है, तो अगर सीता का किरदार किसी को निभाना होगा तो वो कौन होगी आपकी नजर में? यार ये आंसर मैं क्या दे सकता हूँ, रवीना आप दे दो। अभी ना इस मंच पे किसी और का नाम लिया ना आमिश ने, तो बहुत अच्छा नहीं होगा। नहीं, बट रियली आई मीन गोइंग विद द ट्रेंड एंड एवरीथिंग, ऑब्वियसली जो समवन हु सिंबलाइजेस और लुक्स दैट पावरफुल इनफ, ऑब्वियसली, एंड व्हेन इट इज मेड इनटू अ मूवी देन वी शैल सी। आई विल बी प्रोड्यूसिंग द फिल्म फॉर श्योर देन। 100%. Are we done? Thank you so much. Anybody else over here? Yes, sure. Hi, I'm Sankalpita from Book Geeks. I want to ask you, what has been your best, most thrilling moment in your entire writing career? Besides this one? Yeah, thank you, Raveena. Entire writing career. Entire writing career is actually when my first book, Immortals of Melua, it was rejected by every publisher that it was sent to.
And finally, we self-published because they said it's a religious book, so they said it'll not sell. These are success And they said that the main market is the youth. The youth aren't interested in such subjects. So actually, we self-published the book. And my most thrilling moment was when the first print run came home, and my son was. No, the check wasn't that big those days. The check came home. But my kid was a year old at that time, and we opened the carton together, and he was kind of flipping through the book. That was one of my most favorite moments of my life, actually. Which is your son's favorite book? Like, which Right you now? have written? Yeah. No, he can't read my books right now because there's some violence and he's only 8 years old. But Harry Potter? Yeah. Can I say Harry Potter? Okay, he's finished Harry Potter already. He reads a lot. Both his mother and father, we both read a lot, so he also reads a lot. He's a very smart kid. Self-published. All right, so I think. Sir, actually, I want to thank you. Means I was never interested in this kind of fiction, but because of you, you made history more interesting. And I also wanted to ask, means after Ramchandra series, we thought you will be progressing forwards or taking. But what was your inspiration, means for writing about Sita? And do you think in present scenario that women have means not lost, but they have. They are not that powerful which they were before, and you have projected her as a muscular and athletic woman, yes, strong woman, not only physically but also mentally. I agree with you entirely, and as Raveena said earlier, this is something that we need to learn. In ancient times, we actually had a far more equal society. And how can a society progress if half of that society is not allowed to contribute? So मतलब एक पाँव काट दो तो चलोगे कैसे, भागोगे कैसे? So this is something very crucial, and Sita Ma is a role model for many of us. So seeing her as not just physically strong but a mentally strong, tough woman, I think is an important movement to have. And I'm trying to make my own small contribution to it. She's made wonderful contributions to it with her movie, with Matra, with so many other movies that she's done. And I think all of us need to play our role in this. This is a very important movement. I think we all should congratulate Amish for this wonderful book and this wonderful cover. I'm sure aap sabhi ko ye apni And if we are ending, if I may, I want to thank Raveena. Thank you so much for coming here and gracing this occasion. You've really made this event that much more special. And I should also thank the agencies who have designed this cover, this wonderful piece of work. That's Sideways out there. Abhijit, raise your hand. And Abhijit and team. And Arthat out there. These are the two geniuses who've actually put this together. Absolutely brilliant work. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Okay, so individual interviews will happen shortly, but don't forget to pre-order the book at Tidal Waves, and you will get an autographed copy, from Amin. Okay, so I think. Okay.